जय भारत, गुड मॉर्निंग, जय विश्व। मैं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। दिस इज इंजीनियर सूरज सिंह स्पीकिंग फ्रॉम भारत इंडिया ऑन दिस डे 3 सितंबर 2023 संडे एंड 3:30 AM आई थिंक इट इज 3:32 AM। मैं सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आज 3:32 सुबह के और रविवार 3 सितंबर। क्वालिटी सिटीजन की, हमारे देश का सिटीजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में एक गंभीर क्वेश्चन, गंभीर सवाल, वेरी सीरियस क्वेश्चन। व्हाट इज लेवल ऑफ सिटीजनशिप वी शुड हैव? सिटीजनशिप मीन्स परमानेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड द सोसाइटी मीन्स आवर्स, दैट इज भारत इंडिया। भारत के समाज का वो सदस्य जिसको हम सिटीजन कहते हैं, भारत के संविधान की लैंग्वेज में वी कॉल सिटीजन every member of our society or country or nation that is named Bharat India. एक गुणवत्ता होनी चाहिए, that is a requirement. Therefore, objective of this talk is consideration of level of citizenry we should have. Is it only member or it should have some quality for improving this nation as well as for improving whole world? Being a part of world, it is responsibility of every citizen to prove that it belongs to world and should have affinity towards words for improvement of Earth planet. Earth planet हम सभी का है. Nobody can deny this fact. We all belong to this planet. And also we belong to our geographical boundary which has been demarcated by ourselves. God did not demark that. God prepared, God designed, and God produced this earth for us, a part of solar system, and we should be very clear about that. I'm not telling something new. It's a fact of life that we are part of this world as well as we are part of this country. Now, my target is, my focus should be on Bharat India. Whatever population we have, it should be quality population. If we have only population without any value within it, then there exists no meaning to have quantity. Population here is referred to quantity because quantity, just quantity, without having inclusion of any degree of quality in that, doesn't mean anything. अगर गुणवत्ता नहीं है मेरे में, मैं देश के लिए क्या करूँगा और मैं अपने लिए भी क्या करूँगा? गुणवत्ता नहीं है तो मैं जो भी करूँगा, अच्छा नहीं करूँगा, खराब ही करूँगा। खराब मीन्स डिफेक्टिव करूँगा। और मानव का मतलब है, मुझे इस पृथ्वी के बारे में सोचना पड़ेगा। और पृथ्वी के बारे में सोचने का मतलब ये है कि मेरी एक्सेस जहाँ तक है, उस एरिया तक तो कम से कम सोच ही सकता हूँ, या मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ का तो सोच सकता हूँ। हमारा देश का संविधान है, हमारे देश का विधान है, हमारे देश में नियम कानून भी है, सब कुछ है। सिटीजन भी बहुत हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं और बिना पढ़े लिखे भी बहुत हैं, मेहनत कश भी बहुत हैं, बिना मेहनत कश भी बहुत हैं। हमारे देश में पॉलिटिशियंस भी बहुत हैं, इंजीनियर्स भी बहुत हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हैं, साइंटिस्ट भी बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बहुत हैं, वर्कर्स भी बहुत हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत हैं, इंडस्ट्रीज भी बहुत हैं। मतलब आप किसी भी लेवल पे जाएं, आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। इसका तात्पर्य ये भी तो है कि हम बहुत पावरफुल नेशन हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, सब है। और आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली हम एक वेल्दी स्टेट हैं, एक धनवान देश, जिसे आप हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति को कि सेठ है, पैसे वाला है। मैं वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम एक ऐसा देश हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन करें, जिसकी एनालिसिस करें, तो शायद पूरे विश्व में ऐसा देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा हूँ,
मैं अपने मस्तिष्क से सोच के, हर चीज का पृथक्करण करके, एनालिसिस करके मैं इस बात को कर रहा हूं। देश मेरा है। देश मेरा है कहने से मेरा नहीं होता, उसको समझने से और उसके लिए कुछ करने से होता है। देश नारों से भी नहीं चलता, देश देश की सोच से चलता है। देश उस देश के नागरिकों की प्रयत्न से चलता है, उस देश के नागरिकों की डिटर्मिनेशन से चलता है, विल पावर से चलता है। देश कहने के लिए देश नहीं है। देश का मतलब हम जितने भी मेंबर्स हैं इस देश में, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या अप्रोच है। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे मिल जाए, किसी को मिले ना मिले, तो क्या मेरी अच्छी कैपेबिलिटी कहलाएगी, मेरी अच्छी चरित्र की दृष्टि कहलाएगी? या मैं सबके लिए सोचूं पहले, या मैं कहूं कि पहले मैं पूरे विश्व के लिए सोचता हूं, फिर अपने भारत इंडिया के लिए सोचता हूं, और उसके बाद मैं अपने परिवार के लिए सोचता हूं। ये सीक्वेंस मैं किस तरह सोचूं, ये डिसाइड करना मेरा काम ही नहीं है, इस देश के हर व्यक्ति का काम है। क्योंकि जब देश की बात करते हैं तो हम सब की बात करते हैं। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी की कमी है, हम भावनाओं में बह जाते हैं। We flow in emotions, in sea of emotions, and we do not analyze anything. We rarely use mind, but we often use soul or emotions or sentiments. And wherever sentiments are used, sentiments are flown in that case, to that extent, mind does not work successfully. जब जब हम भावनाओं में भय हैं या भय रहे हैं या भयेंगे, उस समय दिमाग के दरवाजे कुछ क्षण के लिए, जब तक वो भावना बैठती नहीं है, बंद हो जाते हैं। डोर्स ऑफ आवर माइंड आर ऑटोमेटिकली क्लोज्ड टू दैट पीरियड ऑफ creation of or evolution of sentimental flow of my waves and your waves. Until these waves flow, mind's doors cannot open. And if mind does not work, this means I don't work. If my mind is closed, it doesn't work. This means I don't work for that duration, because during state of my being emotional, I cannot analyze anything and I am just moved biasly. I cannot respond logically, I just accept it arbitrarily, or you can say, I would accept everything in terms of faith. And when emotions play in that way, I act like inactive person for that moment. And this not only applies to me, but also it applies to everyone. And we, majority of our people, are sentimentally oriented. Sentimental in any way, sentimental in whatever way, at national level, at state level, at society level, at neighborhood level, at family level, and exclusively at personal level. Yes, to some extent, in certain environment, emotions are good. Sentiments are good, keeping in view humanity. कभी कभी इंसानियत को साथ में रखते हुए, मानवता को साथ में रखते हुए, या किसी और को भी साथ में रखते हुए, जिसमें दूसरे प्राणी हैं, जैसे जानवर हैं, पक्षी हैं, दूसरे हैं, वहां तक तो सेंटिमेंट्स काम करते हैं। लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, हर समय तो वो भी काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी सेंटिमेंट्स कुछ समय के लिए तो लेती है, लेकिन जब माइंड काम करना चाहता है तो सेंटिमेंट्स भी बेकार हो जाते हैं, उनका कोई आउटपुट नहीं होता है। हमारे देश का नागरिक अधिकतम अधिकतम सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। और एक नागरिक इमोशनल नहीं, मासेस इमोशंस जनरेट कर देता है। हमारे देश के नेता इमोशंस को बेचते हैं। हमारे देश के राजनीतिक नेता इमोशंस पे अपना मकान बनाते हैं।
अपनी सीट पर पहुंचने के लिए इमोशंस पे रास्ता बनाते हैं, भावनाओं से खेलते हैं देश के अपने मेंबर्स के साथ, अपने नागरिकों के साथ। और नागरिक क्योंकि नागरिक है, उसके साथ इतना विजन नहीं है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए देश के बारे में सोच तो सकता है, उसके बाद फिर वो भूल जाता है कि मैं भी देश के बारे में सोचूं। इस चीज़ का फ़ायदा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं। Emotion is being abused, it was abused, and it shall be abused by potential blackmailing and selling politicians who sell emotions to everyone without paying anything. Salespersons are our politicians. Emotions, sentimentality, and rousing your hearts above level of mental potential. And that destroys our humanity to some extent, because just coming to power remains an objective for every politician. And I stress on this. Citizen has to understand what these politicians are. Are they really national builders? Are they? We have to think about that. Whose nations they will build? My nation or their own nation? That part we have to consider without any hitch, without whatever I can say. We should be smart enough to analyze that situation. But can we? Because every citizen does not have thinking potential to that level. And that is not reason, actually, because every citizen is occupied in its own affairs. Every citizen cannot think for everything. But politicians have professional capability to destroy everything. You know, construction always remains very difficult. It requires your mentality, it requires your power of designing something, it requires powers of arranging materials, resources, technology for doing something, for creating or producing something. It is engineering, I can say, engineering and science, or science and engineering that develops whatever nation. And we are also one of those. But to what level we respect science and engineering? That is a question everybody has to consider. हम विज्ञान को, हम तकनीक को कितना महत्व देते हैं एक नागरिक होने की वजह से, ग्रुप ऑफ नागरिक होने की वजह से, कि हमें सोचना चाहिए। यदि हम साइंस को, इंजीनियरिंग को माइंड से नहीं समझते, सिर्फ भावनाओं से समझते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो हम उन वैज्ञानिकों की, उन इंजीनियरिंग की वैल्यू कर पाएंगे जो हमें ये सब दे रहे हैं, ना हम अपनी वैल्यू कर पाएंगे। देश चलता है दिमाग से, देश चलता है प्रॉब्लम को समझने से, देश चलता है प्रॉब्लम को समझने से, उसका निवारण करने से। Country moves with consideration of problems, analyzing of problems, finding and resorting to various solutions. And after solutions, what happens? Does it help nation? Does it help citizen? Or it helps only certain groups of people, or you can say vested interests only? I would say politics is something that we have twisted. In fact, we citizens of ours have twisted politics into bad stream. It should be given right direction, but it cannot be given right directions until we have potential to do that. You know, we say what you one think, others would think same, or in our language, we say bhel chal. Paid chal means a kind of movement
One, if wrongly follows, others too would follow. That moment is emotional walk, sentimental walk. If I see someone walking and I follow that person, or others follow that person, that doesn't mean any constructive approach. वो एक निर्माण करने वाली धारा नहीं है। एक आदमी गलत कर रहा है, हम भी गलत करते जाएं क्योंकि वो गलत कर रहा है, तो क्या ये समझदारी होगी? आप खुद सोचिए। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसको मैं सोच समझ के करूँ, एनालाइज करके करूँ, लॉजिक समझ के करूँ, तो मैं भावनाओं में नहीं बह सकता। लेकिन ऐसा होता है, लोग सोचते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं और उसी पर चल देते हैं। उस समाज में जहाँ सोच गिर जाए, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो हमारे देश का समाज हो या किसी और देश का समाज हो, सोच बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, एक्शनेबल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राजनीति करने वालों को वैल्यू ना दें। आप स्वयं भी तो राजनीति करते हैं। क्या जरूरी है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होंगे तो ही राजनीतिक कहलाएंगे? इस देश का हर व्यक्ति पॉलिटिशियन है। अब आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो आप पॉलिटिक्स की बुराई कर रहे थे। मैं पॉलिटिक्स की बुराई नहीं कर रहा, मैं उन पॉलिटिशियंस की बुराई कर रहा हूं जो पॉलिटिकल इंडस्ट्रीज बन गए, पॉलिटिकल कॉमर्स बन गए, पॉलिटिकल दुकानें खोल के बैठ गए। सामान खरीदो उनसे। कौन खरीदेगा? मैं और आप ही तो खरीदेंगे, और हम खरीदते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, किसी लीडर के नाम पे हम सामान खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये भी हमारी तरह ही एक भारत का नागरिक है, ये भी उतना ही सोच सकता है जितना मैं सोच सकता हूँ, या हो सकता है मुझसे भी कम सोच सकता हो, क्योंकि इसका इंटरेस्ट है उस चेयर पे पहुँचने का जहाँ से बैठ के ये अपने 5 साल हमें या तो फायदा करेगा या हमारा नुकसान करेगा, या देश का फायदा करेगा या देश का नुकसान करेगा। That way, if we think, means we have to consider ourselves as politicians of top class. That point is missing. We leave to them either you or that. ऐसा छोड़ देना कि आप हैं या कोई और है, हमें करके दे दो, हम तो रहेंगे मजे से। जब सोच ऐसी हो जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। फिर हमारी अपनी क्वालिटी कहाँ है? हम कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस। कहाँ है सेल्फ गवर्नेंस? I am governed by those people who are having vested interests, whatever party it be, whatever person it be. मैं फ्री कहाँ हूँ? मैं फ्री तब होगा जो मैं सोचूंगा, जो आप सोचेंगे, उसी का ये लोग सोचेंगे। वो तो नहीं हो रहा है। Promise is one part and delivery is another part. डिलीवरी तो है नहीं, बार बार नहीं है। प्रोमिस तो बार बार हैं। तो नागरिक क्या करे? नागरिक को सोचना चाहिए। ठीक है, नागरिक बिजी है, टाइम नहीं है। अगर नागरिक इतना बिजी है, सोचिए तो ये नेता कितने बिजी होंगे। अगर ये इतने बिजी हैं तो ये आपके बारे में कब सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। आपको बेवकूफ बना तो देंगे ये थोड़ा ले लो, थोड़ा वो ले लो, थोड़ा ये ले लो। जैसे सैंपल होते हैं, आप सैंपल, हलवाई कहता है देखिए खा के देखिए कैसा बना, या कोई दुकानदार कहता है देखिए आप इसको टेस्ट करके देखिए फिर मेरा सामान लीजिए। या आपको टेस्ट तो सब करा देंगे, सैंपल सब दिखा देंगे, लेकिन वो सब फैब्रिकेटेड होंगे, आपके लिए होंगे ही नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए तो अवश्य होंगे, और आप बेवकूफ़ बनेंगे। ये भी 100% सही है। These politicians or so-called politicians, they do not treat people as their friends or members of society. They got only one access and one ambition, and that is to enter into constitutional offices for enjoying 5 years and also preparing for another 5 years. So that is political engineering, you can say, without having any engineering degree or diploma.
I call them political, commercial people, political businessmen, political analysts, and political engineers. So you can say these are all expert engineers, all politicians. They come to politics, they come to political offices, constitutional offices, in spite of fact that many of them, or you can say nearly 40% or 45% of them, having criminal or history backgrounds, they come to serve us. You think if 40% people in our houses, in our legislature, come from criminal background, how you think that they can serve you? Can you think like that? And if you think that way, then I can't explain value and standard of your mindset. We know this person is a criminal or accused, and then we support that person to come to that power. So what does it mean? Means what is level of my thinking if I allow a accuse a criminal to come to political offices? What does it mean? After all, it is government. It is government. My government, my supporting assistance. I am honor of this government. They have to serve me. Do they? My question is very simple and addressed to everyone. What I want to say, मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, और आप समझते क्या हैं इसको। ये बहुत ही आसान बात है। अगर आप नहीं समझते तो मैं समझा समझा के थक जाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। उसका कारण है कि आपके अंदर कोई माइंड सेट है, आप उससे बाहर नहीं आना चाहते। मैं किसी पार्टी की ना सपोर्ट करूंगा, ना किसी के विरुद्ध बोलूंगा। मैं तो सिटीजन की बात करूंगा, नागरिक की बात करूंगा कि हमारा नागरिक में प्रॉब्लम क्या है। अगर नागरिक समझ जाए प्रॉब्लम को, नागरिक समझ जाए कि इसका क्या निवारण है, तो पॉलिटिशियंस तो अपने आप ही फील्ड छोड़ के भाग जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि पॉलिटिशियंस फील्ड छोड़ के भाग जाएं, परंतु मैं ये चाहता हूं पॉलिटिशियंस ये जाने कि पब्लिक क्या है, पब्लिक क्या चाहती है आपसे। अगर वो ये नहीं समझेंगे, वो अपने हिसाब से हमें चलाएंगे, तो हम कहाँ हैं? हम क्या उनके हाथ का खिलौना है? हम क्या उनकी सर्विस के लिए बैठे हैं? अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल सकते तो देश भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हम चिल्लाते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन वो सब प्रयत्न बेकार जाएंगे, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं, करेंगे नहीं, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो पावर में आ गए तो फिर बात क्या है। और इसमें दोनों ही की तरफ से मैं बोल रहा हूं, चाहे वो ट्रेजरी बेंच हो या पोजीशन वाले हों। असली सरकार तो हम हैं, लेकिन हम हैं ही नहीं। हम सिर्फ एक दिन के लिए सरकार होते हैं, जिस दिन हमको पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जाना होता है। उसके पहले हम सरकार नहीं, और उसके बाद हम सरकार नहीं। सरकार हमारी मालिक बन जाती है, पार्लियामेंट हमारी मालिक बन जाती है, सरकार के ऑफिस हमारे मालिक बन जाते हैं। तो हमने उनको क्या मालिक बना दिया? सोवरन कौन? प्रभु सत्ता संपन्न कौन? संविधान साफ साफ कहता है, ज्यादा पेज खोलने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में प्रियम्बल साफ कहते हैं, वी पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के, भारत के लोग, वी पीपल ऑफ भारत इंडिया। When we say we people of Bharat India become author of constitution, we become, you can say, exponent of this constitution, in that case we people become sovereign, we people become republic, we people become every power that is enumerated, that is mandated within our constitution, and that point cannot be destroyed, cannot be abused,
cannot be misunderstood. And until we realize this fact, that body of citizenry of this country is kingdom of this country, king of this country, we cannot control these politicians. Politicians are saleable. It is evidenced after getting elected to these positions of MLAs or MPs. These people keep themselves on sale and they go to some other party after getting some inducement, considerable size inducement. That point we have to be very clear about. If I elect someone as citizen of this country and my victorious candidate who assumes office either as assembly member or MP Lok Sabha or otherwise, and when some politician tries to buy that member and that member offers to be sold, what and where value of my vote is, did that or does that candidate who won considers my vote valuable or just nothing? When person is saleable, this means that person did not work for me, does not work for me, and that person does not care for me. This means my selection goes wrong. My selection goes out of trust. It's breach of trust. You can say, though law does not recognize it as such, but on human basis, on trust basis, that is real breach of trust. In that case, what should I do? In fact, citizen cannot do anything because citizen does not have that power and citizen has to wait for remaining part of 5 years, tenure of that functionary, that authority or that political position or constitutional position of MLA or MP. And there is no other route to resolve this issue, and that is what I say. It is horrible that as a citizen, as a voter, I am cheated, but cheat enjoys, and I feel depressed. Why did I elect this candidate to be my MLA or MP? That's what I say. That person enjoys on my cost, on my trust breach, and I, as voter, cannot do anything. It is easy to speak, it is easy to record, but people are not having time. They don't have time to analyze and think about that. That's why I say emotion or mind state. We have to choose either. It has been noticed, it has been experienced that it is very difficult to change people's attitude because our people have level of high level of belief, high level of trust, high level of, you may call it to some extent mindless thinking or foolishness, and they do it again and again because one person in politics in either whatever party can change minds of people by delivering such talks, and people think if this person talks like this person would do also like that, and that feeling, that thinking, that contemplation, that trust leads nowhere. It's very difficult to get person who sets in your view. No such persons exist because politics is rotten now. We cannot believe anybody. We cannot believe any leader until whatever is asked for, whatever is promised,
what is manifested is delivered. And it is hard fact that delivery is zero or inconsiderable. हमें जो कहता है मैं आपके लिए ये करूंगा, हम मान लेते हैं, भाई कह रहा है तो करेगा, लेकिन हम एनालाइज नहीं करते, हम एक कोफिशिएंट नहीं निकालते कि ये सच कह रहा है या सही कह रहा है या गलत कह रहा है। भावनाएं कुछ नहीं करने देती। जब तक मैं वही कहूंगा, सेंटिमेंट्स और इमोशंस वर्सेस एनालिसिस वर्सेस मेंटल स्टेट। Mental state is defeated, is destroyed by these people momentarily, and these are experts in destructing your stability. And that's the only reason that they enjoy on your blood, on your mindset. This is really horrible for everyone. I have to be careful about this. And that's the only reason that I think that consideration of citizenry is very significant, and also quality of a citizen is most significant. But citizens don't think that way, and it's very difficult to send this message to all citizens of this country, because I'm not a celebrity, I'm not politicians, I'm not public figure. But those who are public figure, they don't even think so. Those who are politicians, they feel happy if people don't think about politics. You can say people also are supportive to them, unfortunately, without having any logical consideration. Arguing for sake of arguing does not mean anything if exists no substance in that, no metal in that. And some people say, I am born for this party, I am blind for this party, my family is behind this party. These kinds of talks are completely septic one. These talks are not fertile. These talks are useless. That's why, my dear citizens, try to understand that you are responsible for constitution of this country. You are responsible for government. You are responsible for loans of nation. You are responsible for good or bad, whatever our nation has to face. And that is really very important part of this talk. I think that I pass my message, and today only I am limited to that one. I'll be back with you. Jai Bharat, think by, think on, think for nation, think for yourself. Jai Bharat.